Hello everyone, welcome to today's class. In today's lecture, we are going to start with the chapter light. Okay, so let's begin. First of all, what is light? So light is a form of energy. Light is a form of energy. Okay, there are many sources of light. Light के बहुत सारे source होते हैं. अगर हम हमारे आसपास देखें, when we look around, we can see a bulb, tube light, a torch. So these are all sources of light. The ultimate source of light is sun. So the ultimate source of light is sun. Okay, we are able to see the things around us only because of the presence of light. ठीक है, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस की वजह से ही हम हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं उन्हें देख पाते हैं. So the things are visible only because of the presence of light. अगर suppose light ना हो, in absence of light means in darkness. In the presence of darkness, we cannot see the things. Things are not visible to us. So we can see the things, we can observe the things, and things are visible to us only because of the presence of light. ठीक है, अब जो चीजें हैं वो लाइट के प्रेजेंस में विजिबल कैसे होती है? How are they visible? So what happens? Suppose say there is an object. This is a box. Okay. So how are we able to see this box? How is this box visible to us? What happens that the light from any source, say there is some source, the bulb or anything, sun or anything. So from any source, the light falls on this object and this object reflects the light. Reflects means the light ray bounces back. ठीक है, bounce back. जैसे एक बॉल है, एक बॉल को अगर हम एक वॉल के ऊपर थ्रो कर हिट करें तो बॉल क्या करेगी? वॉल को हिट करके बाउंस बैक होगी, वापस हमारे पास आएगी. तो सिमिलरली किसी भी सोर्स में से जब लाइट रेज निकलती है और किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है तो लाइट रेज क्या करती है? इट बाउंसेस बैक. ठीक है, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. एंड सो द लाइट रेज रिफ्लेक्ट. लाइट रेज जो है वो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है. जब ये ऑब्जेक्ट लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, we can see this object. This object becomes visible to us. ठीक है? So this is the simple way in which the objects around us are visible to us. So there are a number of interesting phenomena associated with light: reflection, refraction, diffraction, okay, dispersion. These are all phenomena related to light. So we will be going to study one by one in the entire chapter. First of all, the first topic is reflection of light. Reflection. So what do you mean by reflection? Reflection is the simple bouncing back of light. Bouncing back of light rays when it strikes a smooth polished surface. ठीक है, जब भी लाइट रेज किसी भी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस को स्ट्राइक करती है, हिट करती है, तो वो क्या करती है? बाउंस बैक करती है. इट बाउंसेस बैक एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द फर्स्ट लॉ इज that the incident ray reflected ray and normal lie in the same plane. Now we will study what is this incident ray, reflected ray, normal, and what is plane and where are they lying. Okay, consider a plane mirror. This is the representation of a plane mirror. What is a plane mirror? अगर हम एक ग्लास ले और उसको एक साइड से पॉलिश कर दे, सिल्वर पॉलिश कर दे या पेंट कर दे, so the other surface becomes the reflecting surface. So सबने मिरर देखा होगा, सबके घरों में होता है. ठीक है, mirror is present in everyone's house. So this is a plane mirror. Now what happens? From any source, a light ray strikes the plane mirror. When the light ray strikes the plane mirror, it will bounce back. It bounces back. So the ray of light which is coming towards the mirror is the incident ray. The ray of light
which is bouncing back is the reflected ray. Okay, and we draw an imaginary line which is perpendicular to this mirror. Perpendicular to this mirror, and this is known as the normal. Normal is an imaginary line which is drawn perpendicular to the plane mirror. Okay, so this is the normal. So incident ray, reflected ray and normal. Now what do you mean by plane? You might have studied about 2-dimensional plane, 3-dimensional plane. Okay, so what are these planes? 2-dimensional planes means a plane which has only the length and breadth, which has 2 dimensions. For example, square, rectangle, triangle, these are all 2-dimensional figures, 2D figures. So that is a 2-dimensional plane. 3-dimensional plane, the one which has length, breadth and height, okay, which has 3 dimensions. X-axis, Y-axis and the other one Z-axis. For example, cube, cuboid, cylinder, cone, these are all 3-dimensional figures. So 2-dimensional plane, 3-dimensional plane, these are different types of planes. So what do you mean by the line the same plane? Means, for example, a light ray is striking this board. Okay. So the light ray, the incident ray, will strike this board and the reflected ray will come out from this board in the same plane. That is not the case कि incident ray यहाँ पर आ रही है और reflected ray opposite वाली wall से आ रही है. This does not happen. जिस plane पे incident ray hit करेगी, उसी plane से reflected ray आएगी and on that plane itself the normal will lie. So this is the meaning of same plane. Okay. Now, the angle between incident ray and normal is known as the angle of incidence, and the angle between reflected ray and normal is known as the angle of reflection. So the second law says the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Okay. So the second law is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. So this is all within 2 laws of reflection. You might have seen a plane mirror and you might have studied in earlier classes how does the reflection takes place through a plane mirror. We are going to summarize it in very short. How does reflection take place in case of plane mirror? Plane mirror. Suppose this is a plane mirror. This is polished from behind. Okay. So in case of a plane mirror, if you put an object in front of the mirror, we can get its image at the back of the mirror. So we get the image of the object at the back of the mirror, behind the mirror. Okay. So there are certain properties for the image formed in case of a plane mirror. What are those properties? The first property is the image is virtual. Virtual means which is not real, something which is not real. So what happens if the image is formed behind the mirror? अगर image behind the mirror form हो रही है, so the image will not be real. Of course, the image will be virtual. क्योंकि behind the mirror क्या होता है? कुछ भी नहीं होता. So if the image is formed behind the mirror, the image is virtual. The image is erect. Image सीधी बनती है. So the image is virtual and erect. Okay. The object distance, that is the distance of the object from the mirror, will be equal to the image distance, or we say the image distance is equal to the object distance, which means that the image which is formed behind the mirror, so the distance of the image from the mirror, from the image formed from the mirror will be equal to the distance of the object from the mirror. मतलब जितनी दूर पे हमने distance रखा है उतनी ही दूर पे image form होगी. ठीक है? Next is, this is say 1, this is say 2. The third one, the image is laterally inverted. Laterally inverted means कि अगर हम यहाँ पर लेफ्ट बताएंगे तो वो
इमेज में राइट आएगा, ठीक है, मतलब हमारा लेफ्ट मिरर में हमें राइट दिखेगा और हमारा राइट मिरर में हमें लेफ्ट दिखेगा. सो द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. ओके. फोर्थ इज द इमेज इज ऑफ सेम साइज. इमेज जो है वो सेम साइज की रहेगी. जिस साइज का जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी. So these are all properties of the image formed in the case of a plane mirror. Now moving on to spherical mirrors. Observed that you can see your image in a spoon. ठीक है, अगर हम एक स्पून ले तो उसमें हमारी इमेज दिखती है, ठीक है, हमारी इमेज फॉर्म होती है. बट स्पून जो है वो एक प्लेन मिरर नहीं है, वो तो कर्व्ड है. सो उसी टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है ना. व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? लेट अस सी. इमेजिन अ स्फीयर, अ ग्लास स्फीयर. ठीक है, इमेजिन अ ग्लास स्फीयर. अगर उस स्फीयर का एंड द स्फीयर हैज अ सेंटर. ओके, स्फीयर का कोई सेंटर है सी. अगर उस स्फीयर को हम सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड कर दे, वी डिवाइड द स्फीयर फ्रॉम द सेंटर इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, एक पार्ट जो है द फर्स्ट पार्ट उसे हम क्या करें, पॉलिश कर दे. यहां से अंदर की तरफ से पॉलिश कर दे. इनवर्ड्स हम क्या करते हैं, पॉलिश कर दे. हमें पता है कि अगर कोई ग्लास ले और उसको हम एक साइड से पॉलिश कर दे तो वो मिरर बन जाता है, दूसरी साइड से मिरर बन जाता है. तो अगर ये साइड हमने उसकी पॉलिश कर दी या पेंट कर दी, सिल्वर पॉलिश कर दी, तो उसकी जो ये वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर. तो वो रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहां रहेगा, इट विल बी आउटवर्ड्स. ओके, सो इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउटवर्ड्स. ठीक है. अब जो दूसरा मिरर है, दूसरा पार्ट है स्फीयर का, उसे हमने क्या कर दिया, बाहर से पॉलिश कर दिया, बाहर की साइड से. तो इस केस में इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, जो मिरर का फ्रंट साइड रहेगा, वो ये रहेगा इनवर्ड्स वाला. तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट विल बी बल्जिंग इनवर्ड्स. तो इस तरह से हमें दो टाइप के मिरर्स मिलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिरर्स दे आर इमेजिन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, इसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स. ये मिरर्स, दीज मिरर्स आर नॉट स्ट्रेट, दे आर कर्व्ड होते हैं. द मिरर whose reflecting surface bulges outwards, this mirror is known as a convex mirror, and the mirror whose reflecting surface bulges inwards, this mirror is known as a concave mirror. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इन अ कॉन्वेक्स मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड्स. एंड इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, एक कॉन्केव मिरर के केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड्स होती है. ठीक है. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द इमेज फॉर्मेशन from these spherical mirrors or moving on to the say ray diagrams for these mirrors, we first study some of the key terms, some of the say parameters related to these mirrors. ठीक है, हम कुछ parameters पढ़ेंगे इन mirrors से related. So some key terms we are going to study. The first one is the center. The center of which these two mirrors, of the sphere of which these two mirrors were a part of. ठीक है, उस स्फीयर का सेंटर जिसके ये दोनों एक पार्ट थे. सो द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो इस सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, अब एक स्फीयर है, उसका एक सेंटर है, तो सेंटर से जो लाइन, okay, before that
the center of this mirror, this one, and the center of this mirror, say here. ठीक है, ये जो सेंटर था ये तो स्फीयर का सेंटर था, ठीक है, मिरर के बाहर है ये. मिरर का सेंटर मिड पॉइंट, मिरर का सेंटर मिड पॉइंट, दिस इज नोन एज द पोल. Okay, now the distance from center to the mirror to the pole, say the distance of center to the pole to the mirror is known as the radius of curvature. Okay, now the midpoint of this radius of curvature, the center, this is known as the focus. The distance of focus from the mirror is known as the focal length. We are going to study about focus in detail in the further lecture. Okay, now the imaginary line on which the center of curvature and focus they lie, the center of curvature and focus they lie, this line is not a part of the mirror, it is an imaginary line. This line is known as the principal axis. Okay, now the diameter of the mirror, this is the diameter of the mirror. So this diameter of the mirror tells us about the height of the mirror, the size of the mirror, and this is known as the height of the mirror or the size of the mirror is given by aperture. Okay, now as you can see, this is the front of the convex mirror, reflecting surface, and this is the back of the convex mirror. For concave mirror, this is its front, the reflecting surface, and this is its back, the polished surface. The center of curvature and focus lie behind the mirror in case of convex, and the center of curvature and focus lie in front of the mirror for the concave mirror. Okay, so this we will be using in further ray diagrams. So this is all with the parameters. Okay. Now before studying the definition for focus, let us do an experiment. We take a mirror, a spherical mirror, a concave mirror, and so this is the कॉन्केव मिरर. ठीक है, ये कॉन्केव मिरर हमने लिया एंड ये है सन. हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, कॉन्केव मिरर को ऐसे पॉइंट करेंगे कि सन की जो रेज है वो मिरर की तरफ आए. ठीक है, इंसिडेंट हो. मिरर है, मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. व्हाट डज द मिरर डू, मिरर का काम क्या है, रिफ्लेक्ट करना. तो मिरर क्या करेगा, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा. हम क्या करेंगे, वी विल होल्ड अ पेपर, हम एक पेपर को होल्ड करेंगे सच दैट उसकी पोजीशन को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. सो हम उसकी पोजीशन को ऐसे एडजस्ट करेंगे दैट अ ब्राइट स्पॉट इज फॉर्म ऑन द पेपर. एक ब्राइट शार्प स्पॉट जो है वो उस पेपर पे फॉर्म हो. ठीक है, after some time, after few seconds or few minutes, we notice that the paper starts burning. पेपर जो है वो बर्न होना शुरू हो गया. तो वो क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ऑल द लाइट रेज, जितनी भी लाइट रेज जो सन से आ रही थी वो सारी लाइट रेज उसी पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे क्या हो गई, मिल गई, कन्वर्ज हो गई. विसे ठीक है, कन्वर्ज होना मतलब मिल जाना, पास में आ जाना. तो जितनी भी लाइट रेज जो यहां से आ रही थी वो सब उसी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सिंगल पॉइंट पे मीट हो गई, एक सिंगल पॉइंट पे मिल गई. तो इसलिए एक ब्राइट स्पॉट वहां पे फॉर्म हो गया एंड द पेपर स्टार्टेड बर्निंग. तो इन शॉर्ट
the light rays, all the light rays which were coming from the sun, जितनी भी लाइट रेज जो सन से आ रही थी वो सब एक ही पॉइंट पे क्या हो गई, मिल गई, कन्वर्ज हो गई. दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस. ओके, सो नाउ व्हाट इज द फोकस? सपोज दिस इज अ कॉन्केव मिरर. अब जब भी हम मिरर बनाएंगे तो उसमें हमें ये पॉलिश करना जरूरी है, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि कौन सा मिरर है. This is the pole, the center of the mirror. This is the principal axis. This is the center of curvature. Okay, this is the principal axis. Now this is the focus. All the rays of light which are incident, ठीक है, जितनी भी लाइट रेज जो इंसिडेंट है, ठीक है, कैसे इंसिडेंट है? पैरेलल इंसिडेंट है, ठीक है, उनका रिफ्लेक्शन होगा. वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, कहां से जा रही है? ये फोकस से चली गई पहली रे, फर्स्ट. दूसरी भी कहां से जा रही है? फोकस से. तीसरी भी कहां से जा रही है? फोकस से. फोर्थ भी कौन सी जा रही है? फोकस से. जो रेज ऑफ लाइट है सन से जो आती है वो पैरेलल आती है, ठीक है, पैरेलल रेज आती है. सो द पैरेलल रेज incident on the mirror, all of them meet at a single point called focus. सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सिंगल पॉइंट फोकस पे क्या हो रही है? मीट. ठीक है, तो फोकस क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज अ पॉइंट on the principal axis at which all the parallel rays meet after reflection. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है फोकस जिसपे सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती है? मीट करती है. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर फोकस. ठीक है, फोकस क्या करता है? फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो सारी पैरेलल रेज को क्या करता है? अपने में कन्वर्ज करता है, ठीक है, मिलाता है. नाउ दिस इज द केस फॉर कॉन्केव मिरर. ठीक है, ये कॉन्केव मिरर के लिए देखा हमने. Now, for a convex mirror, ठीक है, हमने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर में पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, नॉट पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कहाँ होता है? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर होता है, और ये मिरर का फ्रंट साइड है. ठीक है, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे? मिरर के सामने, मिरर के पीछे तो नहीं रखेंगे. ठीक है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे हम मिरर के आगे खड़े होते हैं, मिरर के पीछे कभी खड़े नहीं होते. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? मिरर के आगे. सो ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल रेज आ रही है वो कैसे चली जाएगी? वो ऐसे चलेगी से. ठीक है, तो अब ये जो पैरेलल रेज है, ये अगर हम देखें तो ये जो पैरेलल रेज, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज हम देखें तो ये रिफ्लेक्टेड रेज देखो दूर जा रही है. द रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग, दूर जा रही है. डाइवर्ज होना मतलब दूर जाना, तो ये दोनों दूर जा रही है. ये रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी मीट नहीं करेगी. तो हमें अगर पता लगाना है कि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली कहां से आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि इन रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. जब हमने रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, वी फाउंड कि ये कहां जा रही है? दे आर अपीयरिंग टू मीट एट फोकस. ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे दे आर मीटिंग एट फोकस, क्योंकि वो एक्चुअली नहीं मिल रही. दे आर अपीयरिंग टू मीट, ऐसा लग रहा है कि वो कहां मिल रही है? एट फोकस. तो हम इसे क्या बोलते हैं? दे अपीयर टू मीट एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. ओके, सो जो ये पॉइंट है फोकस, उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस
at which all the parallel rays meet or appear to meet after reflection. मीट किसके लिए? कॉन्केव के लिए, क्योंकि उसमें रेज एक्चुअली मीट हो जाती है, एंड अपीयर टू मीट किसके लिए? फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इस केस में रेज जो है वो एक्चुअली मीट नहीं करती, ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग होता है, वो रिफ्लेक्टेड रेज को दूर कर देता है, दूर फेंक देता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि पीछे की तरफ एक्सटेंड करके हम ये पता लगाते हैं कि वो एक्चुअली मीट कहां से आ रही है, एक्चुअली मीट कहां पर कर रही है। Okay, so this is all with the definition of focus. Thank you.